હાય, ગુડ મોર્નિંગ. આજે હું તમારું ત્રિપ્ત હાઉસ ફોર કિન્ડર તરફથી તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે ટીચર્સ ડે છે, તો મારા તરફથી તમને હેપી ટીચર્સ ડે. હવે આજે ટીચર્સ ડે એટલે કે શિક્ષક દિન ને આપણે જ્યારે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ તેના વિશે આપણે જ્યારે કોઈ વાર્તા કે કોઈ રીતે આપણે સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ, તો આજે ખાસ તમને જણાવવાનું કે આપણા ફર્સ્ટ ટીચર છે તે મમ્મી છે, જે આપણને બોલતા, લખતા, ખાતા, પીતા, જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની ઓળખ, જિંદગી કઈ રીતે જીવવી એ બધું શીખડાવે છે. જ્યારે બાળક જન્મે ત્યારે માં બોલે છે, કારણ કે તેના પહેલા ગુરુ છે, જે એને નાનપણથી મોટા થાય જ્યાં સુધી સ્કૂલમાં ના આવે ત્યાં સુધીનું બધું શિક્ષણ એને માતા આપે છે. સ્કૂલ સુધીનું નહીં, પણ આગળ પણ જ્યારે બાળકને તેની અભિપ્રાયની જરૂર પડે છે ત્યારે માતા એને સારો અભિપ્રાય આપીને સારા રસ્તા, સારા માર્ગ પર દોરવે છે. અને જ્યારે બીજા ગુરુ એટલે કે સ્કૂલના આપણા ટીચર્સ એટલે કે શિક્ષક, તો હંમેશા મમ્મી કહે તે પહેલા માનવું જોઈએ. જે માર્ગ પર દોરવે તેમાં આપણે એ માર્ગ પર જવું જોઈએ, કારણ કે તે આપણને સારી સલાહ અને સૂચન દ્વારા આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવે છે. જ્યારે પણ મમ્મી કઈ વાત કરે તો એ વાતનું માન સન્માન આપીને એમાં આપણે આગળ જવું જોઈએ. તો આજે હું અને તમે બધા મળીને હેપી ટીચર્સ ડે સેલિબ્રેશન કરીશું, અને એમાં બે ગુરુને આપણે વંદન કરીશું. પહેલા મમ્મી એટલે કે મધર, અને બીજા જે આપણા શિક્ષક હોય, જે તમને ભણાવતા હોય, તમને જ્ઞાન માર્ગ પર લઈ જતા હોય તે. તો આજે હું તમને એવી વાર્તા બતાવીશ કે એક મમ્મીના કહેવાથી જે એના અભિપ્રાય અને શિક્ષણ મુજબ જે આગળ જાય છે એનું ભવિષ્ય કેટલું ઉજ્જવળ બને છે તે આપણે વાર્તા દ્વારા માણીશું. प्यारे बच्चों, कहानी है ईमा और ईरा की, और ये कहानी है एक सफलता की. एक तरफ है ईरा जो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, हाँ, और दूसरी तरफ है ईमा जो अपनी लाइफ में खुश तो है पर ज्यादा नहीं. और वो भला क्यों, आगे आप खुद देख लो. एक दिन ईरा के ऑफिस में. यार तू तो छा गई, इतनी फेमस न्यूज आर्टिकल हर जगह तेरे ही चर्चे हैं. थैंक्स यार. चल मैं चलती हूँ, मुझे एक फेमस कंपनी की सीईओ का इंटरव्यू लेने जाना है. सुना है रातों रात फेमस हो गई है. मैं भी तो देखूं कि है कौन. ये इंटरव्यू तो फ्रंट पेज पे होगा. ईवा इंटरव्यू के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुँच के बोलती है, हेलो, मैं मिस सिंघानिया के इंटरव्यू के लिए आई हूँ. हेलो मैम, कम विद मी. और जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों हैरान रह जाते हैं. तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ कैसे? चल छोड़, बैठ ना यहाँ. तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय विद समोसे ही मंगाऊं क्या? तुझे अभी भी याद है? चल वो सब छोड़, ये बता, मैं तो अपने बचपन के ड्रीम को फॉलो करके यहाँ पहुँच गई और रिपोर्टर बन गई, पर तू यहाँ कैसे? सीईओ? ये सब मम्मी की वजह से हुआ है. पर स्कूल में तो हम एक साथ थे, और जहाँ तक मुझे याद है तू अपनी मम्मी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी. फिर ये सब कैसे हुआ? तो बच्चों, ईमा और ईरा की कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से. दोनों मिडिल क्लास हैं और एक ही एज के हैं. एक तरफ ईरा और उसकी मम्मी. ईरा की मम्मी ईरा पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, पर उसकी ख्वाहिशें पूरी करती है, पर उसे अच्छे बुरे की बचत करने की ज्यादा शिक्षा नहीं देती है, और उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ देती है. इसका एग्जाम्पल यहीं देख लो. मम्मा देखो, ये पियानो कितना सुंदर है ना. तुम्हें चाहिए? हाँ चाहिए मम्मा. कितने का है भैया? 5,000 का है मैडम. लाओ पैक कर दो. ओके बेटा, चलो. थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट मम्मा. मुझे चॉकलेट शेक भी पीना है और भूख भी लग रही है. बर्गर खाएं क्या मम्मा? चलो. मम्मी देखो, ये टॉय कितना सुंदर है, प्लीज दिला दो. बेटा टॉयज तो मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही दिलाया था ना, आप पहले उससे खेल लो, बाद में फिर दिला दूंगी. चलो फिर, टॉय नहीं तो शेक या चॉकलेट ही खिला दो, बहुत भूख लग रही है. बेटा 5 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे और फिर मैं आपको अपने हाथ से बना के शेक पिलाऊंगी.
अब इन सभी बातों की वजह से ईमा मम्मी से नाराज हो जाती है, उदास हो जाती है, चिढ़ने लगती है कि वो सोचती है काश मेरी मम्मी भी ईरा की मम्मी जैसी होती। मम्मा देखो मेरा स्कूल बैग फट गया, दूसरा दिला दो प्लीज। इतना भी नहीं फटा बेटा, इससे तो मैं खुद ही ठीक कर दूंगी। पैसे सेव करेंगे बेटा, तभी तो तुम्हारे आगे जाके काम आएंगे। और अगले ही दिन स्कूल में लंच करते हुए ईमा बोलती है, यार आज फिर मम्मी ने टिफिन में ग्रीन वेजिटेबल्स दे दिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू बता तू क्या लाई है आज? सैंडविच और बर्गर दिया है। मेरी मम्मी तो बेस्ट है, उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या पसंद है। वाओ यार, हाउ लकी, तेरी मम्मी कितनी अच्छी है। काश मेरी मम्मी भी तेरी मम्मी की तरह ही होती। ईमा ईवा से चिढ़ने लगती है, पर साथ ही साथ ईमा अपने सारे दुख सुख खुशियाँ ईवा के साथ ही शेयर करती है। अगले दिन ट्यूशन जाते हुए, ये देखो मेरा न्यू बैग है ना, कितना क्यूट। हाँ यार मुझे भी चाहिए, पर मेरी मम्मा तो दिलाएंगी नहीं। अरे इतना भी महंगा नहीं है। नहीं यार, पर अभी तो ठीक किया है मम्मी ने बैग, बाद में ले लूंगी ना। ईमा और ईरा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं। वहीं ईमा पढ़ने में तेज है तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है कॉलेज से। स्कॉलरशिप तो मिल गई है, पर विदेश जाने का खर्चा बहुत महंगा पड़ रहा है, तो तू थोड़ी पैसों की हेल्प कर सकती है क्या? और ऐसे ही ईमा अपने सारे दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। नहीं हो पाएगा यार, सॉरी। माँ से तो कुछ बोलना ही बेकार है, जिंदगी भर सिर्फ कंजूसी ही की है। और इसी बीच ईमा की माँ सब कुछ सुन लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और अगली ही सुबह जब वो सोकर उठती है तो देखती है, अरे ये क्या है? माँ का लेटर? बेटा इसी दिन के लिए तो कंजूसी की थी, ये पैसे रख और विदेश जाने की तैयारी कर। पता है इरा, जिस मम्मी के बारे में मैं भला बुरा सोचती थी, आज उन्हीं की वजह से मैं इन ऊंचाइयों पे हूँ। और हाँ पता है, माँ ने मुझे 3 चीजें हमेशा सिखाई थी। दिखावे की जिंदगी मत जियो, सादगी और सरलता आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। माँ कंजूस तो थी, पर एक एक रुपए की कैसे वैल्यू की जाती है माँ ने बखूबी सिखाया है। और हाँ, हेल्दी और अच्छा खाने पे तो माँ ने हमेशा ध्यान दिया है, तभी तो आज हष्ट पुष्ट घूम रही हूँ। इन्हीं सीख को फॉलो करते करते मैं आज यहाँ इस मुकाम पर। જોયું બાળકો, આ વાર્તા પરથી તમને ખ્યાલ આવ્યો કે એને પેલા મમ્મી કંજૂસ લાગતા હતા, એને બરાબર કઈ વસ્તુ નથી અપાવતા, એના શોખ પૂરા નથી કરતા, ખાવા પીવાનું એના મન મુજબ આપતા નથી, પણ તમે જોયું એ બધું કર્યું એની પાછળ એના મમ્મીનું કોઈ કારણ હતું. એને જ્યારે પૈસાની જરૂર પડી, વિદેશ જવાનું થયું, ત્યારે એને એ જ પૈસા કામ આવ્યા. જે કંજૂસ મમ્મી કહેવાતા હતા એના બદલે એના ધ્યાનમાં મમ્મી કેટલા સર્વશ્રેષ્ઠ બની ગયા. તો એને જે રીતે એના મમ્મીએ જ્ઞાન આપ્યું અને એનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવ્યું, એમ તમારા મમ્મી પણ તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે તમને કંઈ પણ સલાહ સૂચન કરે, બરાબર, તો તમારે એમાં કોઈ ખોટું લગાવવું નહીં અને તમારે જે મમ્મી માર્ગ દોરે તેના પર જવું. હેપી ટીચર્સ ડે. આજે ટીચર્સ ડે હોવાથી ભૂમિબેન આપણને થોડું ટીચર વિશે માહિતી આપશે. આપણને તો ખબર જ છે કે ટીચર શું છે, પણ એમના મનમાં અને એમના આગળ પણ નવા નવા વિચારો હોય તે આપણી પાસે વ્યક્ત કરશે. Good morning everyone. As we all know, today is the 5th September and we celebrated this day as a Teachers' Day in our country. Teachers' Day is celebrated on the name of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who himself was a great political leader and an excellent teacher. Today I like to say something about the importance of teacher in our life. Teachers are the pillar of our society. They guide and shape the student's life. Teachers are like a candle who consume itself to lighten the path of others. Parents gave birth to a child, whereas teachers mold the child's personality and show the path of a better future. The role of teacher is like a ladder in student's life, which is used by everyone to climb up in life, but the ladder itself stays at one place. Teacher continuously inspires students
to do their best in their life and support them to achieve their goals by being a friend, philosopher, and a guide. Teachers are God gifted people in our life who lead us toward the better future without any kind of expectation and selfishness. As Dr. Abdul Kalam says, teacher's life can lighten the many lamps. At last, I would like to say that teachers are our gurus. In Sanskrit, we call the teachers our gurus. And I like to dedicate this slok to our teachers, our gurus. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Thank you all of you, and I am thankful to Tripta teacher staff who gave me this opportunity. Thank you very much everyone, and happy Teachers Day to all. સરસ ભૂમિબેન, બહુ સરસ તમે અમને તમારા વિચારો અને જે નવી જાણકારી આપી તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે મારી તરફથી તમને પણ હેપી ટીચર્સ ડે.